Hello and welcome to Do I Like It, a Quint production where we review anything and everything under the sun. मेरा नाम है प्रतीक and in this episode I'll tell you do I like Almost Pyaar with DJ Mohabbat, the album. Almost Pyaar in DJ Mohabbat is an upcoming film written and directed by Anurag Kashyap with music by the Hans Zimmer to his Nolan Amit Trivedi. After their collaborations in Trivedi, Bombay Velvet and Manmarziyan, this would be their fourth film together. And every time they come together, they make some really memorable music. Like remember the heartbreak anthem Darya? Bhai aaj bhi sun ke rona aata hai. Or the 60s jazz ballad Dharam Dharam with Neeti Mohan. So when it was announced that Kashyap is working with Amit Trivedi again, I was hooked. But did they manage to recreate the magic of their previous albums? Let's find out. अब कश्यप की एल्बम्स हमेशा एक जॉनरा के अराउंड रिवॉल्व करती हैं लाइक मनमर्जिया वॉज अ लॉट ऑफ पंजाबी पॉप बॉम्बे वेलवेट वॉज ऑब्वियसली जैज देवडी वॉज इंडी रॉक एंड हियर द जॉनरा इज EDM. I'm assuming because there's a DJ in the film, so I was expecting some ekdam dham 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 wale club bangers. But the album unexpectedly starts with the somber but groovy track Duniya. Not to be confused with another Kashyap and Amit Trivedi का track Duniya. वो याद है ये दुनिया बड़ी गोल वो वाला. It's not that. This song feels like मतलब ऐसा लग रहा है कि a character is lying down in a dimly lit room, eyes closed, just thinking to himself कि यार ये लड़की मेरी दुनिया बन गई. मतलब there is excitement but also लग रहा है कि इस बंदे का बुरी तरह कटने वाला है. काफ़ी conflicting vibes आ रही हैं इस गाने से and it makes you think about a lot. It's a very slow and warm start. I like it. Unexpected, but it had my attention. But from the very next track, Banjare, it goes hard in the club. And how? I could imagine myself in a disco with drinks and everyone's dancing, having a great time. But all that's not to say that it was just beats and dik chik. See, the lyricist of this album, Shelly, which by the way is also the name of my senior editor. Hi, Shelly. So, yeah, Shelly has this talent of using really simple words, like sometimes even bachkane shabd, but conveying such profound thoughts. It's impressive. I'll give you an example. मनमर्जिया का ट्रैक ग्रे वाला शेड तो तुमने सुना ही होगा. उसमें एक लाइन है इश्क नज़रिया बदले ने रोमांस दे तेवर इश्क नज़रिया कहंदे ने नु म्यूचुअल फेवर. अब नॉर्मली सुनने में क्या बकवास लाइन लग रही है कि भाई ये क्या हो गया फेवर तेवर कर रहे हो. But in the context of the music and the overall movie, this makes so much sense. The film is about new age romance, a woman who's confident about her sexuality, who's madly in love, she wants to give, but also wants love in return, in all forms, emotionally, physically, हर तरह से. It fits perfectly. वैसे ही इस एल्बम में ऐसे बथेरे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ एक बार सुनने में वो टुच्ची सी लाइन लगती है, मतलब वो ऐसा लगेगा कि बच्चा भी लिख सकता है यार कोई. But with the conviction of Amit Trivedi, it lands perfectly. सेकेंड ट्रैक बंजारे में एक लाइन है विच इज़ दिस फ्रीडम एंड हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना टाइप गाना. उसमें एक लाइन है अपनी धुन में यूं ही रहते हैं खुद को क्रेजी कहते हैं. नाउ इफ़ आई डिलीवर दिस लाइन नॉर्मली, इसमें फर्स्ट लाइन होती है अपनी धुन में यूं रहते हैं खुद को क्रेजी ये कहते हैं. अब ऐसे अगर मैं गाता तो इट वुड हैव साउंडेड वेरी ब्लैंड एंड वेरी एकदम नॉर्मल. बट सी सेकेंड लाइन में व्हाट दे डू. Second line में they have a change of melody and cadence and they do something like खुद को crazy. तो they had that stop to emphasize the point that देखो भाई ये ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ही crazy बोल रहे हैं. And this is what I mean when I say that there is conviction by the makers कि even though normally पढ़ने में ये line एकदम normal सी लगे, with the music and with these छोटे छोटे changes कि एक second का pause लेके वो same line को deliver करना, that effect lands एकदम perfectly. And this album has loads of moments like this. और देखो यार ये उस तरह की फिल्म ही नहीं है जहाँ पे there would be deep metaphorical शायरी with classical words and all. अब एक फिल्म की एल्बम जो होती है उसकी vocabulary should reflect the characters and the time that it exists in. And just like that, in this album there is a lot of slang, a lot of, Snapchat, Netflix, million views, ऐसा Gen Z vibes हैं. Obviously through the eyes of थोड़ी boomer public, but it mostly works. Now before we move forward, I want to tell you about our Hindi podcast सियासत with उपेंद्र. अब इंडिया में पॉलिटिक्स तो हर जगह है,
बट उपेंद्र हमें बताएंगे सियासत के कुछ ऐसे किस्से जो शायद आपको ना पता हो, जैसे डिड यू नो अबाउट बलवंत राय मेहता, अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, जिनको पाकिस्तान आर्मी ने असैसिनेट किया था, या के आर नारायणन, जिनको जब एक म्यांमार की सिटीजन से शादी करनी थी तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इंडिया का कानून बदल दिया था. इंटरेस्टिंग राइट? तो क्विंट हिंदी का पॉडकास्ट सियासत सुनने के लिए टाइप द क्विंट सियासत ऑन योर प्रिफर्ड पॉडकास्ट ऐप एंड लेट अस नो इफ यू लाइक इट. नाउ after all of these songs, let us talk about the highlight of the album, the sixth song, मोहब्बत से क्रांति. ओह भाई, what a line. मोहब्बत से ही तो क्रांति आएगी. I'm sure the brief of this thought would have been very amazing, and this is typical Kashyap, by the way. We should thank him for adding so many words to our pop culture vocabulary with each film. जैसे राजकुमार हिरानी है ना, वो हर फिल्म में नया कॉन्सेप्ट लेके आता है, जादू की झप्पी, ऑल इज वेल, गांधीगिरी. वैसे ही अनुराग कश्यप ऑल्सो हैज़ दिस हैबिट कि वो हर एल्बम में कुछ नया फंडा देता है, लाइक तेरी कह के लूँगा और इमोशनल अत्याचार, वुमनिया, बहुत हुआ सम्मान, है ना. एंड आई थिंक इस फिल्म की दिस स्पेशल थॉट इज़ गोना बी ये कि मोहब्बत से ही तो क्रांति आएगी, बिकॉज आई कैन ऑलरेडी सी दिस बीइंग अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट एंथम, मतलब इंडिया का बेला चाओ सॉर्ट्स. अगेन मतलब as I said before, इतने simple words हैं, but with that thumping bass and synth, it's like goosebumps. There's a line which says, कोई तकरार ना हल पाएगी, इसके आगे किसी की ना चल पाएगी, मोहब्बत से ही तो क्रांति आएगी. मतलब it's too good. With songs like these, people like Amit Trivedi and Shelly and Anurag Kashyap are trying to reinvent the idea of modern music. For a very long time we have thought कि music सिर्फ एक ही तरह का हो सकता है, उसमें सिर्फ एक ही तरह की शायरी हो सकती है, and a lot of purists, and I have been one of those people, are like कि भाई नहीं यार, तुम English word कैसे use कर सकते हो गाने में, it has to be poetic and it has to be this. But the whole idea of art and music is that there cannot be any hard rules. अगर something like फटेला जेब सिल जाएगा, if it is working for that situation, for that song, it is just working. You can't argue with that, है ना. But when I say all of this, in no way do I mean that this album was perfect. After the first two tracks, Woman Desi and Ghanghor Connection and all of that, they were good, but they were mostly very bland and meh. मतलब वो beats थी अच्छी, but it didn't incite any sort of crazy emotion in me. Netflix and Chill though, it was a very groovy track, but these songs were better for driving. I remember जब मैं ड्राइव कर रहा था ये गाने चला के, तब मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा था, because it was काफ़ी वो simple words थे, the melody was very catchy, there was a drop. तो मुझे लगता है कि ये सारे गाने एक ड्राइविंग वाली सिचुएशन में अच्छे रहेंगे, but they have like the versatility of them wasn't as much as I would have liked. And as for the final two tracks, I didn't care a lot about them. So ऐसा होगा ही कि 2-3 tracks के बाद बाकी songs in comparison would sound a bit dull. So to end this and to answer the question, do I like Almost Pyaar with DJ Mohabbat's album? एक तो if anyone from the team is listening to me, please अपनी albums के title छोटे करो यार. क्या है Almost Pyaar with DJ Mohabbat? Yes. So yeah, do I like this album? Yes. I really like this. दुनिया और मोहब्बत से क्रांति have already been added to my playlist, and थोड़े टाइम में Netflix and Chill भी हो जाएगा. I think it suits the sur and the world of these characters, at least posters or teasers से जितना हमें समझ आ रहा है. And I'm sure they're going to be shot beautifully. Like Anurag Kashyap is always somebody who treats his songs very, मतलब अलग सा कुछ करता है, तो काफ़ी मज़ा आएगा देखने में. But did they match the previous 3 albums? I would say that it's too soon to say. For me, other than मोहब्बत से क्रांति, it didn't have any undeniable hits like परदेसी और इमोशनल अत्याचार या बॉम्बे वेलवेट जितनी कोहिसिव भी नहीं थी ये एल्बम. तो फॉर नाउ इट इज़ ऑब्वियसली एट द बॉटम ऑफ द 4 एल्बम्स कश्यप एंड अमित त्रिवेदी हैव वर्कड ऑन. बट यार अभी 2-3 दिन ही हुए हैं एल्बम आए, थोड़ा ग्रो होने दो, फिल्म आने दो, शायद मामला थोड़ा एक्साइटिंग हो जाए. बट येस, दैट वॉज डू आई लाइक इट. और तुम लोग मुझे बताओ कि मोहब्बत से क्रांति आएगी या नहीं. मुझे तो लगता है कि मोहब्बत से ही आएगी और किसी चीज़ से नहीं आएगी. सो DM us on Instagram at the Quint to tell us what we should review next. This was Prateek and I'll see you in the next one.
Do I Like It is a Quint original podcast executive produced by Shelly, Walia and Ritu Kapur. This episode was hosted and produced by Prateek Lidhoo and edited by Anjali Palod. It uses audio from the album Almost Pyaar with DJ Mohabbat, and the theme music is from BMG. You were listening to the Quint's podcast.